अगर किसी कंट्री से न्यूट्रिनोज या किसी जगह से न्यूट्रिनोज आ रहे हैं या एयर में आ रहे हैं या जमीन या किसी, if I detect these neutrinos around the atmosphere around that particular country, that means something fishy going on over there, right? या न्यूट्रिनोज मुझे हवा में मिल रहे हैं लेकिन यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं, तो न्यूट्रिनोज कहाँ से आ रहे हैं? दूर से भी आ रहे हैं, कॉस्मिक रेडिएशन से भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं तो भी क्या हो रहा है? रेडियो एक्टिविटी डीके हो रहा है। मान लो कि मार्स से आ रहा है, मैंने सोर्स ढूंढा कि मार्स से न्यूट्रिनोज आ रहा है एंड somehow I detected these neutrinos and I found the source at Mars. So I could say that uranium is present on the surface of Mars. So uranium is rare earth material. So I will carry out exploration to exploit this uranium on the surface of Mars. ये सब लोग इधर उधर घूमने जाते हैं मार्स मून पे, they have been carrying out all this expedition not to show their strength and not to show their technology, but they always hunt for rare earth material. क्योंकि 92 एलिमेंट्स है तो 92 आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स अभी नहीं, कुछ ना कुछ तो रेयर अर्थ एलिमेंट कहीं ना कहीं होंगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी पता चल गई, ठीक है। सो दैट्स व्हाई न्यूट्रिनोज रिसेंटली साइंटिस्ट they have they started putting their interest in these neutrinos. India is the second country after US that has decided to establish neutrino observatory, and this neutrino observatory was established at Pottipuram in Theni district of Tamil Nadu. And in this particular issue was in the news because this particular area near Putti, where you can find the solar forest, and there were some environmental concerns. Or we underground observatory, 2 kilometer tunnel also, and which institute has carried out its construction? Tata Institute of Fundamental Research, Model Institute. इससे क्या हो रहा है? इशू क्यों आ रहा है? बंदीपुर और मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वो उसमें एनक्रोच हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने उसको अपोज किया था। तो दिस इज द इशू। तो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, न्यूट्रिनोस किसमें आता है? बीटा प्लस डीके प्रोसेस में। इफ यू फाउंड न्यूट्रिनो दैट मींस you found the source of radioactivity. If any satellite catches the neutrinos, that means something fishy going on over the surface of Earth. समझ में? American they have sophisticated satellite, they literally picked up these neutrinos from any location. इसलिए अमेरिकन को पता नहीं, नीचे तो पता नहीं, ऊपर से मान वे फैसिलिटी, नीचे से तो सैटेलाइट इमेज अगर देखा जाए तो अगर कोई वेल है अंडरग्राउंड टनल तो मुझे वो डॉट दिखेगी ऊपर से मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये न्यूक्लियर वेपन की क्या है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो मिसाइल भी हो सकता है, राइट? बट अमेरिकन सैटेलाइट डिटेक्ट्स न्यूट्रिनोस in the atmosphere, so that means what, some radioactive substance is there and radioactivity is going on. कौन सा radioactivity? Beta plus decay is going on. समझ में आ रहा है? So that's why if suppose question comes, why we need to spend so much amount of money just to find out the neutrinos on the surface of Earth? It's not about neutrinos, it's about technology to detect the signature of radioactivity. समझ में आ रहा है? Neutrinos. तो बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके प्रोसेस समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, व्हाट आर न्यूट्रिनोस, ये दो बार पूछा है, ये एमपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, दो बार पूछा। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोजेक्ट मेंस में तो भी पॉजिट्रॉन क्या है, ये सब मैंने लिख दिया, तुम लोग करो। नाउ रेडियो एक्टिविटी एंड कार्बन डेटिंग, ब्रेक लेते हैं बाद में मेरा लेक्चर में थोड़ा पढ़ लो रेडियो एक्टिविटी, समझ में। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th स्टैंडर्ड के बियॉन्ड नहीं जा रहा हूं मैं, कोई 11th स्टैंडर्ड नहीं, कोई 12th स्टैंडर्ड, एवरीवन क्लियर इज और हर 10th स्टैंडर्ड। अब ये भी मत बोलो इसका मेरा तो साइंस है ही, 10वीं तक तो था, 10वीं के बाद में ज्वाइन हो, ठीक है। कार्बन डेटिंग, राइट? So first we need to understand is what is the meaning of carbon dating. Commonest question that is being asked in MPSC for guys, कौन सा क्वेश्चन है? Who found this technology? Who found this method? Willard Levy is a scientist. ठीक है, हमेशा पूछता है MPSC का फेवरेट क्वेश्चन, यूपीएससी ने कभी तो पूछा नहीं। Willard Levy developed this method, he got Nobel Prize in 1960. ठीक है, what is the meaning of carbon dating? Three things you need to consider as far as this technology is concerned. Yes, first thing is what, you can find out the approximate age of fossil, not the approximate age of that animal. ठीक है, ये हमें याद रखना, वो भी ऐसे स्टेटमेंट है। और you cannot find how long that animal was alive or how long that animal survived. This particular thing you cannot find out with the help of carbon dating. Carbon dating means you can just find out the approximate age of fossil. ठीक है, fossil means that consists of organic material, carbon, hydrogen and oxygen. Carbon dating common question क्या आएगा? Which of the following element is used for the purpose of carbon dating? और आंसर ऑप्शन होगा C12, C13, C14 and all of the above. आंसर इज ऑल ऑफ द, ठीक है, इसको कहते हैं पूरी, ठीक है। So because we need to find out the ratio, change in the ratio. What is that carbon dating is all about? We discuss. So slowly जाते हैं, carbon dating क्या है?
इधर now suppose for example this is the surface of earth, right, and this is the nitrogen, the most abundant element in the atmosphere. It goes through beta plus decay under cosmic radiation. It turns into carbon 14, which is radioactive. Okay. This carbon C14 is radioactive means it tend to decay. It has potential to decay. उसका amount क्या होगा, कम होगा. So in order to understand this carbon dating, you need to understand the concept of half-life. What is the meaning of half-life? Radioactive substance after certain year reduce to its concentration or reduce its weight, or what we can say concentration बोल सकते हैं, by 50%, and whatever the time it takes to reduce its concentration by half, that is nothing but what, half-life. तो समझ लो, मान लो ये 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम, राइट, 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम है. अब उस यूरेनियम में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मान लो एक टुकड़ा है पूरा, ये टुकड़ा लिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. सपोज मान लो 1 क्यूबिक मीटर का एक टुकड़ा, 100%, यहाँ पे 100% यूरेनियम, राइट. नाउ 1 क्यूबिक मीटर का एक टुकड़ा सेम वॉल्यूम है. नाउ दिस यूरेनियम टर्न्स इनटू डिफरेंट एलिमेंट. अब लेकिन यूरेनियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सिर्फ 50%. तो बचा क्या होगा, लीड. यूरेनियम का भी क्या हो गया, लीड हो गया, राइट. And if I knew the half-life of uranium, so that means this uranium 238 takes 4 billion years to turn itself into 50%, to reduce itself into 50%. कितना टाइम लेता है, 4 billion years. तो इसका मतलब right now whatever the material rock material sample I found, and I found only 50% of the uranium, then original amount it had contained at the time of formation of Earth. तो ये इसका क्या हो गया, 4 बिलियन ईयर इसका हाफ लाइफ हो. तो अगर मान लो कि यूरेनियम वाज द ओनली एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, एंड राइट नाउ यू आर गेटिंग ओनली 50% ऑफ यूरेनियम पर क्यूबिक मीटर, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेट एज ऑफ अर्थ इज आल्सो 4 बिलियन ईयर्स. समझ में आ रहा है, क्योंकि तब यूरेनियम नहीं था. अब यूरेनियम पर क्यूबिक मीटर में कितना मिलता है, 50%. तो पहले 100% हुआ होगा. तो हाउ साइंटिस्ट गॉट द हाफ लाइफ हियर, थ्रू सिमुलेशन टेस्ट, थ्रू न्यूक्लियर टेस्ट. So that's why scientists they carried out various nuclear tests, and through these nuclear tests they found the half-life of various elements. Iodine 131, cobalt का half-life, polonium का half-life, uranium का half-life, uranium 235 का half-life. So with the help of nuclear tests, series of nuclear tests, scientists with the help of supercomputers they found the half-life of various elements, and they found the half-life of uranium 4 billion years. Right? So means uranium, if uranium was there at the time of formation of Earth, and if you take 100% concentration of uranium at the time of formation of Earth, and right now you are getting only 50% of uranium per cubic millimeter, the approximate age of Earth कितना हो गया, 4 billion years. This is how you calculate the age of Earth. इसको ही बोलते हैं uranium dating, uranium lead dating, uranium argon dating. There are different type of. But as far as 14 sample is concerned, जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हम यूरेनियम डेटिंग नहीं यूज, हम दूसरा मेथड यूज करते हैं. कौन सा, कार्बन डेटिंग. अब कार्बन डेटिंग में क्या है, C14 is radioactive means after some year, if that C14 was radioactive after some year, C14 reduced to its half, and scientists found that 5,730 years, after 5,730 years this carbon 14 original amount अगर x है तो 5,730 years के बाद वो कितना होगा, x by 2 हो जाएगा, राइट. ठीक है, तो क्योंकि वो क्या है, रेडियोएक्टिव. And now this radioactive carbon 14 combines with oxygen, that gives rise to CO2. CO2 enters into the photosynthesis process, and that generates biomass and oxygen. This biomass is nothing but what, or the biomass generated by autotrophs. Once these carbon C14 enters into biomass, it is converted into C12 and C14. So whatever biomass inside my body, your body, inside plant, vegetation, animal, flora, fauna, जो भी है, उसमें क्या होता है, C14 होता है और C12 होता है and C13 भी. So carbon has 3 isotopes. ठीक है, कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स, कार्बन 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 3 आइसोटोप. आइसोटोप मींस इसका एटॉमिक नंबर सेम, तो क्या चेंज होगा, मास नंबर. इसमें से ये क्या है, रेडियोएक्टिव. Once it converts into C6H12O, that is biomass, it turns into C12 and C13. Right now we are holding C12 and C13, and C14 is going inside and outside through respiration, क्योंकि एयर में क्या है, C14. So through this air, what is the percentage of nitrogen in the air you breathe in? 17%, right? So whenever you breathe in this atmospheric air, the C14 goes inside, but also come outside in the form of CO2. So means as long as that animal was alive, that animal has constant ratio between C14 to C12. ठीक है, कौन सा रेशियो पकड़. अब ये C14 क्या हो गया, बीच में फिर एनिमल देगा, मान लो ये डायनासोर.
ये डॉगी। सो जितना भी फ्लोरा फाउना है उसमें C12 C13 में चला गया, right? So these animals when they were alive, the C14 goes inside outside and as the ratio between C14 to C12, C14 to C13 constant होता है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म मर गया, उसका फॉसिल तैयार हो, बोन्स, ह्यूमंस का भी फॉसिल तैयार हो। अब ये फॉसिल मैंने after some year I found the fossil. Now once that or if the organism dies after the death of organism, incoming C14 gone, right? जो भी तुम्हारे बॉडी में बचा कुचा C14 वो भी डिके हो जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। लेकिन C12 और C13 तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, रेशियो भी चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। बेस्ड ऑन दैट चेंजिंग रेशियो यू कैन फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ फॉसिल। दिस इज द कार्बन डेटिंग। समझ में आ रहा है? नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ दिस इमेज। इनिशियली सपोज ये वुड फॉसिल है, ये वुड फॉसिल है। Initially A0 when that plant was alive, that plant was carrying out photosynthesis at that time 100% C14 was there, C12 is also there and C13 is also, ठीक है। ये C12 है, ये C13 और C14। आफ्टर 500 and 5730 years C12 C13 सेम रहे, लेकिन C14 क्या हो रहा है, कम हो गया। कितना होगा, 50%, ठीक है। फिर उसके बाद और डबल ईयर 11,460 ईयर्स में कितना होगा, 25%, देन ओरिजिनल अमाउंट है। आफ्टर 17,190 ईयर्स कितना बचेगा, 12,000 12.5%। मैक्स टू मैक्स आफ्टर 25,000 ईयर्स you will not see any C14 left in the sample। एक फिगर ले लिया, more or less approximate 25,000 years, if the fossil older than 25,000 years you hardly get any carbon C14 in that sample। इसका मतलब carbon 14 can be carbon dating can be carried out only the sample that is 25,000 till, or I would say the sample is 25,000 older than before the present। Otherwise if the age goes beyond the 25,000 years you cannot find out the dating or you cannot carry out the carbon dating of that sample। अब उसके बाद क्या होता है, वो क्या होता है, फॉसिलाइज होता है, फॉसिलाइज रॉक फॉर्मेशन। तो मान लो डायनासोर का एग है, वो यहाँ तक ठीक है, उसके बाद वो रॉक बन जाए, ठीक है। इसलिए वेरी डिफिकल्ट टू से डिस्टिंग्विश बिटवीन रॉक एंड डायनासोर सैंपल, इसलिए ब्रश यूज करो धीरे धीरे उसको, क्योंकि फॉसिलाइज हो। सो कार्बन डेटिंग समझ में, बेस्ड on the basis of the change in the ratio between C14 to C13 and C12 to C14 you can find out the approximate age of that fossil। That is nothing but carbon dating। Carbon dating can be carried out only with the help of carbon dating can be carried out only with the fossil sample, not with the rock sample or any other। जहाँ पे C14 होता है, सॉरी जहाँ पे ऑर्गेनिक बायोमास होता है, वैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये वुड सैंपल है, ये वुड सैंपल है, यहाँ पे मान लो ये सैंपल बन गया। अब इसमें 0 एज पे क्या होगा, C6H12O6, ये क्या है, बायोमास। एमपीएससी में क्वेश्चन पूछा था बायोमास के बारे में, बायोमास, ठीक है। नाउ धीरे धीरे क्या होगा, कार्बन C12 टू C13 कांस्टेंट होता है, तो मोस्ट ऑफ, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, यूज होगा। डिकम्पोजिशन के लिए क्या यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन। सारे एलिमेंट ऑक्साइड्स में टर्न हो जाएंगे, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, फाइनली बचेगा कार्बन हाइड्रोजन, यही हम उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट टर्न इनटू हाइड्रोकार्बन। अगर वो सबमर्ज फॉरेस्ट है तो कोल बन जाएगा, अगर वाटर कंटेंट है और मरीन डिपॉजिट है तो क्या बन जाएगा, पेट्रोलियम रिजर्व। इसलिए हम पेट्रोलियम रिजर्व और कोल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रहा है? ओके, तो दिस इज व्हाट कार्बन डेटिंग इज ऑल। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मैक्स टू मैक्स हाउ लॉन्ग यू कैन कैरी आउट दिस कार्बन डेटिंग विद सैंपल विद फॉसिल सैंपल, 25,000 या ज्यादा से ज्यादा 25। इफ द सैंपल इज ओल्डर देन 25,000 यू कैन नॉट कैरी। हेलो सर। सर माइक बंद। हाँ ठीक है,
right? So naturally, uranium 238, this is a natural uranium. It is also known as yellow cake. Screen share. Right? So naturally, uranium is seen in the form of uranium 238, that is also known as yellow cake or पीले color का cake. Right? So suppose for example, if I call Kazakhstan को फोन किया कि मुझे येलो केक भेजिए और मुझे केक भेजिए, तो कोई मॉर्निंग और उसकी केक नहीं भेजी, क्या बचेंगे? येलो केक भेजिए. Yellow cake is the name of this uranium 238. We see in the natural form this uranium. Now there are two types of fuel being used in the reactor. ठीक है, एक होता है फिसाइल मटेरियल और एक होता है फर्टाइल. एक सेम वर्ड है, थोड़ा इल्यूजन क्रिएट करते हैं, राइट? Fissile material fertile, which is also known as fertile material, also known as fissionable. So these two kinds of fuel being used in the reactor. Fissile material means very dangerous. Chain reaction. We initiate the chain reaction very easily with the help of fissile material. Remember one thing. Till now, what we have discussed through this chain reaction, in order to get the energy, in order to harness the energy chain, we need to sustain the chain reaction. राइट? चेन रिएक्शन अगर नहीं चलेगा तो एनर्जी भी नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि एक न्यूट्रॉन जब दूसरे किसी न्यूट्रॉन को दूसरे किसी न्यूक्लियस को बम्बार्ड करता है तो 3 न्यूट्रॉन बाहर आते हैं. फिर से एक वो इंडिविजुअल न्यूट्रॉन और 3 न्यूट्रॉन को बाहर निकालेगा, समथिंग लाइक दिस चेन रिएक्शन गोस ऑन. बट वी नीड टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन आल्सो, राइट? वी नीड टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन आल्सो. सो कंट्रोलिंग चेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर. सो अगर ये चेन रिएक्शन बंद हो गया तो वैसे भी एनर्जी बाहर नहीं है, लेकिन वो इतना भी नहीं चलना चाहिए कि एक्सप्लोड हो जाए. सो सस्टेनेबल चेन रिएक्शन इज मस्ट मींस. So we need to control the chain reaction by reducing the number of the neutron and the speed of the neutron, and we need to sustain the chain reactions, right? So in fissile material, we can easily initiate the chain reaction. We can easily initiate the chain reaction. Fissile material means very dangerous material. You can run the reactor or you can develop the nuclear weapon with the help of fissile material. So reactor run कर सकते हैं या फिर you can develop nuclear weapon. But fertile or fissionable material, you cannot use directly this material into the reactor. So it does not readily undergo into nuclear fission reaction. It takes some time. You need huge bombardment of the neutron, and then that particular substance enters into chain reaction. Means it is very difficult to initiate the chain reaction in fissionable or fertile material. Now, if I give you the example of the difference between this fissile and fission, just try to focus on this example. Fissile material के examples क्या है? Uranium 230 तो पहले चलो पढ़ लेते हैं. Fissile isotopes are atoms that can undergo fission reaction very easily. Fertile isotopes where it is a little bit difficult to initiate the fission reaction. ठीक है? यहाँ पे क्या? Cannot undergo fission directly. You need to convert these fissionable into fissile, and then you would use these material. उसका example देखो, uranium 235, plutonium 239, uranium 233. और fissionable का example यूथोरियम 232 और uranium 238. इन दोनों में क्या डिफरेंस और क्या क्या कैची है? So under the heading of fissile material or fissile isotope, whatever the substance I see, these substances or these elements having odd number of atomic mass. And under fertile or fissionable isotopes, atomic mass क्या है? Even number. तो B में क्या fission आएगा? All of the following are fissionable element except. तो बीच में क्या होगा? Uranium 239. All of the following are fissile material except बीच में क्या होगा? Uranium 238 होगा. Right? Most of the group they consider uranium 238 as a fissile also, but ऐसा नहीं, वो fissionable है, fertile. ठीक है? अब ये ऑड इवेंट क्या है देखते हैं. उसको बोलते हैं पेयरिंग इफेक्ट. क्या बोलते हैं उसको? पेयरिंग इफेक्ट. नाउ फिसाइल मटेरियल में पहले उसको थोड़ा समझा देता हूं कि फिसाइल और फिशनेबल क्या है. फिसाइल में क्या होता है? इमीडिएटली चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, इसलिए वो एटॉमिक वेपन में भी यूज करते हैं और रिएक्टर में भी. फर्टाइल इज लाइक अ धक्का वाली. फर्टाइल और फिशन उसको बहुत सारा धक्का देना पड़ता है. जैसे ना कोई टेम्पो होता है, उसको हमेशा धक्का देना पड़ता है कि वो सेकंड गियर में स्टार्ट करके फिर वो दिन भर वो गांव में जो बस है ना वो कभी बंद नहीं. महामंडल बस से बंद नहीं. क्यों बंद हो गया? तो धक्का देना, समथिंग लाइक. और आई गिव अ डिफरेंट एनालॉजी. गांव में ट्रैक्टर होता है, जो लोग खेती करते हैं उनको पता होगा जुगाड़ क्या है. दे जस्ट पुल द ट्रैक्टर. पहले उसको चालू करने के लिए क्या? डीजल डालना, फिर उसके बाद केरोसिन क्या कुछ भी डाल ट्रैक्टर. राइट? इनिशियली यू माइट हैव हर्ड अबाउट RX 100 बाइक होता है, यामा, राजदूत, पुरानी वाली डीजल वाली, बुलेट, एनफील्ड. राइट? ये सारे व्हीकल किसी भी फ्यूल से चल जाते हैं. इवन लीजेंडरी स्टोरीज वेयर उसमें कुछ लोग वाइन में डाल देते हैं तो भी चालू है. राइट? कॉमन सेंस अल्कोहल. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता. बट यस, प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल, यस, यू कैन रन द बाइक आल्सो. राइट? प्योर फॉर्म मींस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. जो प्योर फॉर्म आएगा अल्कोहल का 100% अल्कोहल, उसको डाइल्यूट करके फिर वो ब्रांड किया जाता है. हाउ मच परसेंटेज अल्कोहल यू कैन फाइंड इन दैट बॉटल? अल्कोहल बॉटल कितना होता है? 48%. बियर में कितना होता है? 8%. प्रीमियम बियर में कितना होता है? 5%. अब मैं ये मेरा कोई बिजनेस का मैं कोई लीडर नहीं, बस ये जनरल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो ऐसा जनरल अवेयरनेस किसी काम का नहीं है. ठीक है.
राइट? तो ट्रैक्टर को फिर केरोसिन पे चला दे। राजदूत वाली गाड़ी थी, 2 स्ट्रोक वाला इंजन, दुबे वाला। सारे दूध वालों के पास एक ही गाड़ी होती है, राजदूत, शानदार सवारी, जानदार सवारी। गाड़ी बोलो, राइट? तो means kerosene is like the fertile or fissionable material. Out of the kerosene, if you purify, इसलिए उसको मिट्टी का तेल भी बोलते हैं, उसको प्यूरिफाई करके पेट्रोल बनाया जाता है या डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब केरोसिन नहीं दिखता, राशन सिस्टम में भी नहीं दिखता। So petrol is like a fertile, fissile material, kerosene is like fertile. ऐसे analogy. So in the difference, when we see the difference between fissile material and fertile material or fissionable material for the purpose of nuclear reactor, fissile material can be used to run the reactor and to develop the nuclear weapon. Fissionable material or fertile material is a substance where it's very difficult to initiate the chain reaction. So कुछ काम का नहीं होता। उसका एग्जांपल यूरेनियम 238 which is a natural uranium. यहाँ पे सारे मैन मेड होते हैं, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, थोरियम, यूरेनियम 233, something like this, odd and even number. So what is the concept of even and odd number of this atomic? So यहाँ पे मैं fissile लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, fissionable. Okay. Now what is this pairing effect? Why these fissile material they have an odd number of atomic mass? Why fissionable material or fertile material has even number of atomic mass? इसमें क्या है, suppose for example, you know that alone child is dangerous for the family. ये कोई generalize नहीं कर, but most of the cases यहाँ पे बहुत सारे लोग alone child है तो वो उनको पता हो highly cuddle babies, right? और they don't know about sharing और siblings जहाँ पे sibling होता है वो अपने आप अपनी ego lose कर लेते हैं। बुक्स भी बड़े भाई के, ड्रेसेस भी बड़े भाई के, बुक्स, ड्रेसेस, चप्पल से लेके सब तक हम शेयर करना सीखते हैं। बट alone child is very, even in the physics and chemistry also, single electron is highly reactive in the outer. जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का शेल, इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़े हो गया, और अगर कुछ भी लोगे रिएक्टर वो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट हो गया। लेकिन इफ यू सी द वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल, दैट एलिमेंट बिकम रिएक्टिव। सो लोनलीनेस, अलोननेस इज अ डेंजरस, एक इक्वेशन बना सकते हैं। सो फिसाइल मेटल लाइक सपोज फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235, दिस इज यूरेनियम 235, राइट? और यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल ये यूरेनियम 235. Now uranium 235, because we need to bombard the neutron in order to get the energy that is hidden inside the nucleus of uranium 235. We carry out bombardment with the help of these Superman. ये क्या है? bombardment. Spider-Man, ये half Pandora, Superman. ये क्या है? न्यूट्रॉन bombardment, right? न्यूट्रॉन bombardment. ये क्या है? uranium 235 का nucleus. न्यूट्रॉन bombardment से तुम क्या सोचो? You need to break open this nucleus of uranium 235. Now uranium 235, what is atomic number? 92. तो प्रोटॉन कितने होंगे? 92. न्यूट्रॉन कितने होंगे? 143. ठीक है, right? Now this is what called pairing effect. So there is a strong nuclear force between proton and proton and proton and neutron and neutron and inside the nucleus. तो ये 92 प्रोटॉन 92 न्यूट्रॉन से पेयर करेंगे। पहले पेयर किसका होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कितना प्रोटॉन है? 92। तो न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 90। तो उनसे दोस्ती हो जाएगी, राइट? They will shake their hands with each other. So 92 protons and 92 neutrons will be. कितने न्यूट्रॉन्स बचेंगे अभी? 51 न्यूट्रॉन बचे। फिर न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन का पेयर होगा, तो कितने पेयर बनेंगे? 25 पेयर, 50 न्यूट्रॉन्स गायब। कौन बचा? एक न्यूट्रॉन बचा। दिस वन न्यूट्रॉन मींस लोनलीनेस। इसको आता है गुस्सा। इसका मतलब एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन, एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी ऑफ और अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस न्यूट्रॉन मींस इनिशिएशन ऑफ चेन रिएक्शन। तुम सिर्फ उसको धक्का दो, ये इनिशिएट हो जाएगा चेन रिएक्शन। इमीडिएटली क्या है? चेन रिएक्शन विल इनिशिएट। दैट्स व्हाई ऑड नंबर is also an odd number. The element having odd number of atomic mass is what? Is fissile material. Fissile material means chain reaction initiates very easily because of availability of excess neutron. समझ में आ रहा है? तो मैं ये इमेज दिखाऊं, बट एक्सेस न्यूट्रॉन बहुत होते हैं। एक्सेस न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना, इसका मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन इफ द चेन रिएक्शन हैपेंस विद fissile material. समझ में आ रहा है? यहाँ तक सब कुछ समझ में है? अब देखते हैं फिशनेबल फर्टाइल मटेरियल, उसका एग्जांपल यूरेनियम 2। अब यूरेनियम 238, इसका मतलब इवन नंबर है तो सारे पेयरिंग हो जाएंगे, राइट? तो यूरेनियम 238 इज आल्सो नोन एज न्यूट्रॉन हंगरी। ये निर्वाण प्राप्ति, राइट? ये मिलता है सब मोह माया। तो मुझे कितना भी धक्का, जब यही न्यूट्रॉन को इधर लेके आता बोलता कितने भी धक्के मार, मैं निर्वाण प्राप्ति, मैं मोह माया से दूर। अगर तुझे आना है तो मैं तुझे भी खा, आओ। बाबा जी बोलते आओ, सब मोह माया, शिष्य बना। बाबा बोलता है कि कुछ नहीं, पैसे कमा के क्या करोगे? ये बोल के बाबा खुद ही पैसे देते हैं, राइट? राइट? Now means uranium 238, even if you bombard, it means it does not, the chain reaction does not start very easily. You need to bombard with huge number of neutrons. फिर भी बोलता नहीं। So fissile fertile material or fissionable material or uranium is what? Neutron वो खा लेता है।
इसका मतलब सारे न्यूट्रॉन बाबा की मोह माया में चलेगा, समझ में आया, राइट? क्यों? इसका पेयरिंग ऑड नंबर आएगा ही नहीं, सॉरी एक्सेस न्यूट्रॉन अवेलेबिलिटी है ही नहीं, समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाई द एलिमेंट हैविंग इवन नंबर ऑफ एटॉमिक मास is fissionable or fertile, where you find very difficult to initiate the chain reaction. Against it, when we see the fissile material, the chain reaction starts very easily. समझ में आ रहा है? And most of these, in fact, fissile materials are man-made fissile, fissionable materials are natural elements or natural radioactive substance. समझ में आ रहा है? Okay. So this is the difference between fertile and fissile. This is the difference between these two isotopes. Now we'll see a odd even further. Okay. Now suppose, for example, once we discuss this particular thing, that is the difference between fissile and fertile isotopes, one thing is clear: if Americans or International Atomic Energy Agency or Russians or P5 countries that they seek to control the proliferation of nuclear weapon, they would put control on the development of fissile material. If they put a control on the development of fissile material, because what we understood through this discussion, fissile material can be used to develop the nuclear weapon. Now, if American wants to control Iran, Americans would ensure that Iran would not produce fissile material. समझ में आ रहा है? That's why Russia, America and other developed nations they brought one treaty. उस treaty का नाम है FMCT. Means fissile material cutoff treaty. अभी समझ में FMCT का मीनिंग क्या होगा? Fissile material cutoff treaty. That treaty seeks to reduce the product, seeks to control the production of fissile material. So fissile material cutoff treaty that seeks to prevent the proliferation of nuclear weapon by putting control on the development of fissile material. Now, another question arises: why India has not been signing this FMCT? How this treaty is biased? Remember one thing: if any treaty or convention is there, हमेशा एक क्वेश्चन आएगा, is India member of that particular treaty or convention? अगर नहीं है तो definitely मेंस में क्वेश्चन क्या है? Critically evaluate, critically discuss why India has not been signing this fissile material cutoff treaty. अब उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, why India has not been signing fissile material cutoff treaty and what is this FMCT? So FMCT, which was being brought, which was being discussed in 1999 Conference of Disarmament. ये कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट मींस इट्स वेरी हिपोक्रेटिक एक्सरसाइज है। इसका मतलब जैसे मान लो कि यहाँ से कोई था एरो या फिर AK-47 इधर, ग्लॉक पिस्टल इधर, RPG इधर, LMG इधर, पूरा वेपन के साथ आ रहे 4-5 लोग, हाँ चलो चाय भी देखो यार, आजकल बहुत वेपनाइजेशन तो क्या है, दूसरे मारने के लिए वो डिस्कस कर रहे हैं। ये अजीब सी सिचुएशन हो, वो नहीं आजकल तो तेरे पास बहुत वेपन है, नहीं ये तो ऐसे ही लिया है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट, दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज, first conference of disarmament took place in 1969, second conference in 1995, and they talked about global disarmament. कौन बोल रहा है? अमेरिका, रशिया, they are holding 20,000 to 30,000 nuclear, and they are talking about to prevent the proliferation of nuclear, right? And what this treaty says, why India has not been signing? The treaty says the proposed treaty means अभी तक पूरा नहीं, क्यों नहीं होगा ही? Proposed treaty said here onwards no country would produce fertile material, sorry, no country would produce fissile material. Here onward means India, here onward means इसका मतलब इसके आगे, right? इसके आगे means these countries they got legitimate right to hold and to produce fissile material because they have enough fissile material to develop the nuclear weapon. इसके आगे नहीं करना, इसका मतलब इंडिया, पाकिस्तान जैसे कोई कंट्री नहीं करेगी, right? So that's why here onwards वर्ल्ड में वो ट्रीटी खत्म हो गई, किसी कंट्री की नहीं सुनी। Another thing is this fissile material cutoff treaty says or that seeks to put control on fissile material, but the problem is you can convert fissionable material to fissile. इंडिया बोला देखो मैं सिग्नेटरी, मैं कोई फिसाइल मटेरियल यूज नहीं, बट इंडिया बोल रहा है कि मैं यूरेनियम 238 यूज कर रहा हूं, एंड इंडिया गॉट द टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट यूरेनियम 238 into plutonium. So any fissile material, any fertile or fissionable material can be converted into fissile. तो कोई भी कंट्री बोलेगा हम तो वैसे भी नहीं कर रहे, लेकिन इफ यू आर यूजिंग यूरेनियम 238 साइन करने के बाद क्लैंस्टाइन ग्रुप डेवलप फिसाइल मटेरियल, तो ट्रीटी वैसे भी वायलेट होने वाली। तीसरा पॉइंट क्या है? India is not at all serious or not at all bothered about this treaty. Why? Because India does not have any intention. India does not have any design to produce fissile material. Why? Because India is already getting this fissile material from other countries. India is importing. India बोला कि मैं खुद नहीं बनाता, मुझे जरूरत नहीं, वो तो तुम लोग दे रहे हो। Because India is getting low enriched uranium 235 from Russia, Japan, Kazakhstan, Australia, US. तो इंडिया बोल रहा है मैं, मुझे मिल रहा है, मुझे प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत, तो वैसे भी treaty हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है, हम इसके बारे में सोचते भी नहीं। ठीक है, तो fissile material cutoff treaty. Now, in order to understand the whole nuclear commerce, we need to understand first reactor design and we need to understand some terms. ठीक है, there are generally, चलिए बाद में देखते हैं, ठीक है, पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनरिचमेंट। ये टर्म समझ में आएगा तो न्यूक्लियर कॉमर्स, बायलैटरल इंटरनेशनल रिलेशनशिप समझ। एनरिचमेंट ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम? ऐसा प्लेन क्वेश्चन आ सकता है। व्हाई? बिकॉज़ रिसेंटली यस्टरडे इजरायली एजेंसीज दे अटैक ऑन Iranian facilities और नदन जो भी एरिया है जहाँ पे ईरान फर्टाइल मटेरियल
प्रोड्यूस कर रहा था. Enrichment of the uranium, then we have to talk about the breeding. Then we'll talk about spent fuel and reprocessing of spent fuel. ठीक है, पहले देखते हैं हम enrichment of the uranium. Before we discuss this enrichment of the uranium, you need to see the current context of this issue. There was a deal between Iran and P5 plus one country. P5 means permanent 5 countries, one means Germany wala country. So Germany broke the deal between these P5 countries and Iran. And what was the deal? USA along with these other countries, they asked Iran not to produce fissile material and not to increase the number of centrifuging devices. And also they asked Iran to reduce the stockpile of already enriched uranium. Right? So 2015 में होता था क्या लिखा है? Under this treaty, Iran agreed to reduce the enriched uranium stockpile. What is the meaning of enrichment of uranium? Allowing only 3.67%. ये figure बहुत important है, 3.67%. Allowing only 3.67% of enrichment of research and civilian use. Limit the number of centrifugation devices. Limit the number of centrifugation devices. अब फिलहाल ये समझ में नहीं आया. After this discussion is over, we will get the idea what is the meaning of enrichment and what is the logic of reducing number of centrifuging devices. Okay, what is the meaning of centrifugation devices or enrichment of the uranium? We'll see. Generally, what happens? Suppose, for example, this is a 1 kilogram of uranium, right? Uranium is yellow cake, so yellow color दिखा. Okay, in that uranium, ये क्या है? Uranium 238. But in uranium 238, 0.7% orange line जो दिखा ना, right? ये 0.7%, 0.7% is what? Uranium 235, which is the only fissile material. Otherwise, uranium 230 is what? Fission. ये कुछ काम का है. जो काम का है वो बहुत कम है इसमें. ठीक है, जिससे हम न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं और रिएक्टर चला सकते हैं, वो सिर्फ 0.7%. ठीक है. Now, if you increase the concentration of uranium 235 with respect to uranium 238, that is enrichment. Suppose मान लो ये 0.7% है, मैंने उसको 3% या 4% किया. 0.7% से क्या किया मैंने? 5% करी. तो 95% क्या बच गया फिर? यूरेनियम 238. और मैं बढ़ाऊंगा 50% तक लेके आऊंगा, तो 50% क्या बचेगा? यूरेनियम 238. The technology which I use to increase the concentration from 0.7% to 5% to 50%, I would use the same technology to increase the concentration of uranium 235 with respect to uranium 238. And if I cross these 80 to 90% mark, I can use these enriched uranium to develop the nuclear weapon. Hello, lecture. Okay. So now if you cross this limit 90%, इसका मतलब 90% uranium 235 and only 5% uranium 238, उसको हम बोलेंगे weapon grade uranium. And if you were to reach only 4% of or less than 5% of uranium 235, उसको हम बोलेंगे reactor grade. इसका मतलब if you enrich the uranium, enrichment of uranium means increase the concentration of uranium 235 with respect to uranium. If you are able to reach 5% mark, you can run the reactor. That is enough for you. इसलिए मैंने बोला कि ये focus करो. Please, समझ में आ रहा है? So Iran is being asked to enrich uranium only for 3.67%, so that Iran could run the reactor, not to develop nuclear weapon. ठीक है? अब ये हो गया enrichment of the uranium. But enrichment of the uranium करते कैसे? To enrich uranium, you will require centrifuging devices. Now, what is centrifuging devices? Centrifuging devices कोई complicated devices नहीं है, वो हमारा mixer है. Because mixer is also runs on the principle of centrifuge. अगर उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा तो क्या होगा? इधर-उधर स्प्रेड हो जाएगा. Centrifugal force. ठीक है? Now, suppose for example मुझे बटर बनाना है, तो obviously बटर लाइट वेट होता है. नीचे प्रोटीन वाला पार्ट, वाटर वाला पार्ट नीचे रहेगा, बटर वाला पार्ट ऊपर रहेगा. मैंने बात कर ली. In milk 98% क्या होता है? वाटर. 1% फैट होता है, 1% प्रोटीन. कौन सा प्रोटीन होता है मिल्क में? केसिन प्रोटीन. ह्यूमन मिल्क में क्या होता है? केसिन प्रोटीन ज्यादा होता है इसमें. ये प्रीमियम रिलेटेड है. ठीक. So now if I increase, suppose मान लो मैंने ये फैट निकाला, ये बटर निकाली, मैंने दूसरा मिक्सर यूज किया, तीसरा मिक्सर, जहां मुझे 1% जो भी मिल रहा है उस सबको कंबाइन करके मैंने एक जार में डाला. उस जार में बटर का कंसंट्रेशन क्या हो गया अभी? 98%. और वाटर का भी कितना रह गया? 2%. Means what? If I increase the number of centrifugation devices, I have increased the concentration or I have increased the amount of butter. Right? समझ में आ रहा है? बटर भी लाइटर में ऊपर आएगा, मैं उसको निकाल दूं. बाकी हम क्या करते हैं? घी बनाते हो, डिस्कार्ड कर देते हैं. राइट? गर्ल्स को पता होगा. राइट? डिस्कार्ड कर देते हैं. ठीक है? This is how it means if you increase the number of mixers or centrifugation devices, you can get pure form of butter. वाटर का कंटेंट क्या होगा?
कम हो जाएगा। सिमिलरली सेंट्रीफ्यूजन डिवाइसेस में यही होती है। लाइटर यूरेनियम 235 एटॉमिक मास कम है, राइट? तो पहले यूरेनियम 238 को नेचुरल यूरेनियम ये लोग को क्या करते हैं, लिक्विड मिला, पहले गैसेस मिला के क्लोराइड गैस यूज करते थे, लिक्विड मिलाते और उसको मिक्सर जैसा घुमाते। जो यूरेनियम 235 वो सिंगल लेयर में आता है ऊपर, जो हेवी यूरेनियम 235 उसको नीचे से निकाल लेते, और जो प्योर फॉर्म का यूरेनियम 235 उसको बाहर निकाल लेते। If you increase the number of centrifugal devices, you can get this uranium 230, like this figure I have shown in this image. ठीक है, क्या लिखा है? न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यूरेनियम 235 makes up just 0.7% of natural occurring uranium, the rest being uranium 238. Enrichment process increase the proportion of uranium 235 by separating it from uranium 238 through centrifugation. नीचे देखो, ये centrifugation device मिक्सर जैसा है, ऊपर क्या आ रहा है देखो, लाइटर 235 moves upward and heavier uranium 238 descend downward, उसको नीचे से निकाल ली, ऊपर वाला दूसरे चेंबर में, सेम प्रोसेस, हेवियर वाला फिर से नीचे से निकाले, प्योर फॉर्म में क्या आएगा, यूरेनियम 235. सो मींस इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूजन डिवाइसेस, तो कंसंट्रेशन भी क्या होगा, बढ़ रहा है, 4%, 5%, 50%, 60%, 80%. That's why these P5 countries or American, they are, or these countries, they ask Iran to reduce the number of centrifusion devices. They also asked to decrease the stockpile of already enriched uranium, and they also asked Iran to limit this enrichment below 5%. Why? Because Iran told them that Iran wanted to enrich the uranium for energy purpose. तो वो लोग हंसने लगे कि आज तो दूसरा जो बोल, ईरान पूछा कि तो Iran is in the middle of Middle East. Iran is a Shia country surrounded by Sunni nations. Iran is a hostile country with Israel also, Saudi also. So now if Iran gets a nuclear weapon, the race will begin, right? So that's why these countries, they ask Iran to put down the number of centrifugal devices to limit the stockpile of already enriched uranium. समझ में आ रहा है? Then first question arises, why Iran wanted to pursue, or why Iran wanted to enrich the uranium? According to Iranian sources, Iran wanted to develop these enriched uranium to run the reactor. But Iran has largest reservoir of natural gas after Russia, and that would sustain its energy need for almost around 200 years. And now Iran says we need this enriched uranium to run the reactor. कोई deal नहीं करे. So that's why they put restriction on Iran. So the Iran agreed that it would reduce these stockpiles of enriched uranium. समझ में आ रहा है enrichment of uranium? Now, if you're able to enrich the uranium till 5%, you can run the reactor. But still, 20% enrichment is enough to run the reactor. But in that case, you cannot develop the nuclear weapon. So any country that supplies uranium to any other country, like for example here in India, India gets uranium 235 from Russia, from USA, from Australia, from Kazakhstan, from Japan. So naturally, कौन सा uranium होगा? Low enriched uranium. कोई 90% वाला uranium देगी ना? So India is getting this low enriched uranium fuel rods to run the reactor. समझ में आ रहा है? Reactor भी ये country देते हैं और fuel भी ये country देते हैं. So India is not in a position, or what India does not have any design to enrich uranium. Why? We'll discuss later on. Okay. And if you cross this 90% enrichment limit, then you can develop the nuclear weapon. It has already mentioned over here. देखो. Okay. Civilian use. The proportion of uranium 235 increased to 4 to 5% to produce fuel for power station. Uranium enriched at least 90% of uranium 235 to produce nuclear weapon. समझ में आया? Low enrichment uranium means 5%. So India is getting this low enriched uranium from US or any other country. So what question अगर आया तो इसका कितना होगा? 5%. ठीक है? Okay. Now we'll see another things, but before that, there are types of reactor. Generally, there are two types of reactor. Reactor is a design. Reactor is a place where you control the changing. ठीक है? So there are two types of reactor generally. एक होता है live water reactor. उसको बोलते हैं boiling water reactor first. ठीक है? या कभी-कभी उसको एडवांस लाइट रिएक्टर भी बोलते हैं. लाइट वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और एडवांस लाइट वाटर. और दूसरा होता है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर. And why we need to discuss this pressurized heavy water reactor? Remember one thing. If a country has pressurized heavy water reactor, that means country has nasty design, bad design to develop a nuclear weapon. Other countries will always look down upon that country if that country went for pressurized heavy water reactor. It's not a good sign. But surprisingly, if I show you the image, India on the cusp of nuclear energy resurgence, says Jitendra Singh. और क्या statement है? The minister also said that government at the center has also accorded administrative approval and financial sections of for 10 pressurized heavy water reactors. Otherwise, earlier government has abandoned this program. But this government has rejuvenated this program of pressurized heavy water reactor of 7,000 megawatt capacity each. ये जरा
क्रिटिसिज्म ये ऐसा हो ही नहीं सकता, इनको पता नहीं क्या है। टू सेट अप अ फ्लीट more in Karnataka, Haryana. So every country has abandoned these pressurized heavy water reactor legally. But see what India is doing. जो पाकिस्तान कर रहा है वही इंडिया, पाकिस्तान कोई काम कर, नो प्रोडक्शन, नो इंडस्ट्रियल, एक ही काम, न्यूक्लियर सर्विसिंग डेवलपमेंट, राइट। और एट द एंड ऑफ द पाकिस्तान इज कितना हो गया आज, 10,000, काफी। सो इंडिया को कोई जरूरत ही नहीं, इंडिया विल नेवर यूज न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट एनी अदर कंट्री, ठीक है। सो दिस इज वेरी, आई थिंक नॉट अ गुड डिसीजन, आई वुड से। अभी पता चलेगा क्यों, और उसके लिए पैसे कितना है, 1,05,000 करोड़ रुपीज, बहुत है, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है ये मुझे पता नहीं, लेकिन अगर इफ यू सी द थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, इफ यू अंडरस्टूड द मैकेनिज्म और डिफरेंस बिटवीन लाइव वाटर रिएक्टर एंड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, or sorry, pressurized water reactor, you see this is not a good decision. So that's why let me tell you the difference between these two types of reactor, light water reactor and pressurized water reactor. Light water reactor is a reactor where you use uranium-235 as a fuel. कौन सा फ्यूल होता है, uranium-230. तो obviously कौन सा uranium यूज करेंगे हम, low enriched uranium less than 5% enriched uranium. Obviously if a country, suppose India got first boil water reactor or boiling water reactor, light water reactor from American General Electrical Company. Okay. India's first nuclear power plant was established at Bombay, which was developed by General Electrical Company of USA. कब हुआ था, 1969 में हुआ, ठीक है। And India has been running this plant since 1969. Imagine, India कोई भी पुरानी चीज कितने भी साल चला सकती। India in fact I would, और वो भी स्टाइल में, विंटेज कार सबसे ज्यादा कलेक्शन किधर होगा, इंडिया में। पुरानी चीज इंडिया में कहाँ था ज्यादा से, ठीक है। एंड इंडिया होल्ड्स द रिकॉर्ड आल्सो। सो लो एनरिचमेंट यूरेनियम 230, अब ये तो ऑलरेडी फिसाइल, you are handling with fissile material, तो लाइट वाटर रिएक्टर और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और एडवांस लाइट रिएक्टर वेयर फ्यूल इज यूरेनियम 235। तो यहाँ पे मॉडरेटर यूज है, मॉडरेटर किसके लिए यूज होता है, टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे मॉडरेटर लाइट वाटर यूज करते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं लाइट वाटर। क्यों लाइट वाटर यूज करते हैं, क्योंकि लाइट वाटर हैज अ कैपेसिटी टू ईट न्यूट्रॉन, टू एब्सॉर्ब द न्यूट्रॉन। क्यों, क्योंकि लाइट वाटर में जो भी हाइड्रोजन का आइसोटोप होते हैं वो प्रोटियम, इसका मतलब यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन नहीं, राइट। सो अगर मैं इसके बदले अगर हेवी वाटर यूज करूं तो क्या होगा, देख, हेवी वाटर मींस D2O, D2O मींस जो भी हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है वो क्या है, ड्यूटेरियम। इसका मतलब क्या है, एक न्यूट्रॉन एक्सेस है। अगर मैं इसको यूज करूं एज अ मॉडरेटर व्हेन आई यूज यूरेनियम 235 तो प्रॉब्लम होगा। क्यों, क्योंकि यू आर ऑलरेडी डीलिंग विद फिसाइल मटेरियल, यहाँ पे न्यूट्रॉन ऑलरेडी एक्सेस है, और तुम हेवी वाटर यूज करोगे तो और ज्यादा न्यूट्रॉन हो जाएंगे। So whenever you use uranium-235, you will never use heavy water. Instead, you use light water to control the chain reaction. क्योंकि light water is what 8 neutron वो खा लेता है. So that's why light water in light water reactor or boiling water reactor or advanced light, उसको different names से हम बोलते हैं. You use whenever you use uranium-235, you use light water as a coolant also and light water as a ठीक है। अब अगर मान लो ये समझ में, अब प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर में यूज होता है यूरेनियम 238 दीवान प्राप्ति वाला, जिसको न्यूट्रॉन खा लेता है। जो न्यूट्रॉन खाता है, अभी लाइट वाटर यहाँ यूज करेंगे नहीं, क्योंकि वो भी न्यूट्रॉन खाता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हेवी वाटर। क्यों, क्योंकि हेवी वाटर चेन रिएक्शन तो चलना चाहिए, तो न्यूट्रॉन अवेलेबिलिटी विल इंश्योर व्हेन यूज यूरेनियम 238। तो जहां हम यूरेनियम 238 यूज करेंगे वहां पे कौन सा मॉडरेटर कूलेंट यूज करेंगे, हेवी वाटर। इसलिए उस रिएक्टर को क्या बोलते हैं, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। कहाँ कौन सा फ्यूल यूज करेंगे, यूरेनियम 238। कौन सा मॉडरेटर कूलेंट यूज करेंगे, ड्यूटेरियम ऑक्साइड मींस हेवी वाटर। Generally, these are the two types of reactor. Most of these countries they have abandoned this program. So instead of this second reactor, now third type of reactor also crops up. उसको बोलते हैं एडवांस रिएक्टर, जो रशिया और अमेरिकन बना है। ये भी लाइट वाटर रिएक्टर है, लेकिन उसका कैपेसिटी ज्यादा, 1000 to 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है पर रिएक्टर। लेकिन इसका ही टाइप क्या लिखा है, एनरिच यूरेनियम, लो एनरिच मीडियम एनरिच यूरेनियम पे चलता है। रशिया में उसको VVER बोलते हैं, वोडका वोडका एनर्जी। वोडका रशिया में वाटर है, वोडका इंडिया में क्या है, वाइन, दारू, ठीक है। लेकिन रशिया में वोडका मींस वाटर, ठीक है। अब रशिया में किसी को बोला कि मुझे वोडका दे तो क्या पानी देंगे, इधर क्या दे, कौन सा वाला so this now we are getting these advanced reactor from Russia. These kind of reactors are VVER reactor having the capacity of 1000 to 2000 megawatt electricity. But generally there are two types of reactor. समझ में आया? तो if I say pressurized water reactor कौन सा फ्यूल होगा, 238। कौन सा कूलेंट मॉडरेटर होगा, हेवी वाटर। if I say light water और boiling water reactor कौन सा यूरेनियम होगा, लो एनरिचमेंट यूरेनियम। वाटर कौन सा वाटर होगा, कूलेंट मॉडरेटर। तो if American, so when American gave us the boiling water reactor, light water reactor in 1969, तो वो कौन सा होगा, लाइट वाटर। क्यों,
क्योंकि अमेरिकन तो न्यूक्लियर वेपन अपने हाथ में तो देंगे 90% एनरिचमेंट वर्क, लो एनरिचमेंट यूरेनियम रिएक्टर ही देंगे ना, तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, समझ में आया? So the first reactor on Indian soil that was established in 1969 was boiling water reactor. And at that time, American company generally, we had very good relationship with the USA till 1969, right? And at that time, Americans, they agreed that they would give us fuel supplies, ready to use uranium barrels. But why India decided to move away with that program, that's a different story. Let me tell you the story. यहाँ तक समझ में आया? ठीक है? अब हमें जो 3 terms समझने हैं दूसरे. What I told you, I would discuss first is enrichment, another is spent fuel, processing of spent fuel and grading process. So in order to understand this process, we need to discuss the 3-stage nuclear program. 3-stage nuclear program of India. So with the help of this program, we can understand what is the breeding technology, what is the breeder reactor now. 3 stages में लिखा मैंने, क्या लिखा है? 3 stage में. ये नाउ नहीं आता. 3-stage nuclear. 3-stage nuclear program of India is क्या है? अब देखते हैं. Now imagine the situation in 1960, 1950 when India recently got independence. We do not have any resources, we do not have any machinery, we can hardly manufacture a safety thing. Imagine the situation. Whole focus was on to develop the heavy industry, capital intensive industry. The economy बढ़ाएगा, मान लो इस मॉडल, ठीक है? ठीक है? So imagine the situation in 1950. See, it's very easy to criticize Nehru, but and it's often it is being seen that the people who criticize the Nehru, they do not know about UPC, they do not know about history. वो WhatsApp यूनिवर्सिटी में भेज दिया. Imagine the situation in 1950, 3 years after India got independence, India established Department of Atomic Energy within years. ठीक है? इसका मतलब जब रशिया conducted nuclear test, the same year India also established, और तुम्हारे पास कुछ नहीं, see the vision. तुम्हारे पास कुछ नहीं और तुम डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश कर रहे हो. See the confidence in your scientists, see the hope, see the vision. And at that time, Nehru thought to have a nuclear weapon, considering the geopolitical situation. Nehru thought to have a nuclear weapon for deterrence purpose. So he asked Homi Jahangir Baba to carry out a primary work. And at that time, Homi Jahangir Baba was there in USA, and he was a nuclear scientist in USA. So Nehru asked Homi Jahangir Baba to come down to India and carry out some nuclear related work. And he asked Homi Jahangir Baba to develop the nuclear technology to develop the nuclear weapon for deterrence purpose. At that time, Homi Jahangir Baba, he conveyed this thing to Nehru that it was not possible for them to develop the nuclear weapon at this time because India did not have the resources at that time. So enrichment is a very distant thing for them at that time. ठीक है? Enrichment के लिए क्या zirconium alloy लगता है, centrifugal device. ये centrifugal device मिक्सर के ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो alloy होता है, zirconium alloy. उसको मेल्ट करना, उसको टंगस्टन से alloy करना, it's very complicated technology. And India did not have those technology or resources at that time. So Homi Jahangir Baba told Nehru that forget about enrichment, we need to find out the different mechanism. And even he told Mo that even we wanted to develop the nuclear weapon by enriching the uranium-235. Still, these countries they would not allow us to develop the nuclear weapon. We need to find out the other option. तो other option क्या है? Other option है pressurized heavy water use. क्योंकि उसमें क्या होता है uranium-238 फ्यूलिंग. ये तो येलो कलर सॉइल है, कोई डाउट नहीं है. क्योंकि इससे कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बना. क्योंकि वो क्या है? फिशनेबल है, राइट? वो फर्टाइल है. So 3-stage nuclear design, 3-stage nuclear program, and according to first stage, he asked Nehru to visit US, and he asked Nehru to use his stature, which was there in the international relation Nehru had at that time. Nehru का international relation में stature बहुत बड़ा. He was a person who was been appointed by United Nations to mediate between North Korea and South Korea dispute. ठीक है? तो नेहरू का उस टाइम में stature बहुत बड़ा था internationally. So Nehru first went to US, and at that time India and USA had very good relationship. So Nehru asked US president कि नया कंट्री है, नए साइंटिस्ट है, अभी जस्ट हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये न्यूक्लियर रिसर्च थोड़ा किलो निकलो ना खेलने के लिए गरीब बच्चे. अमेरिका बोला सी मेरे पास कुछ भी नहीं, पॉकेट से मेरे पास कुछ नहीं, राइट? ये कनाडा बोला तो इधर ये क्या बोल रहे थे. सो नेहरू वेंट टू कनाडा. इनफैक्ट नेहरू sought help from every other country including Russia, but we did not have a good relationship with Russia at that time. So Nehru went to Canada and he asked Canadian Prime Minister, and Nehru had very good relationship with the Canadian Prime Minister. So Canadian Prime Minister immediately said yes, you can have the reactor. So at that time, Canada was the only country that was holding this technology. उसको बोलते हैं CANDU reactor. CANDU reactor means pressurized heavy water reactor. ठीक है? Then why India sought to get these pressurized heavy water reactor? उसका reason हमको पता चलेगा कैसे. Pressurized heavy water reactor is a reactor that runs on uranium-238, natural uranium, and it generates the spent fuel. At that time, considering the India scenario, or considering the India's economic situation, or considering the poverty and India was a hungry country,
Canada and other developed countries, they never thought about this thing that on one day India would develop a nuclear weapon. So that's why immediately Canada said yes, लेके जाओ. So Canada gave us first experimental, वो भी कौन सा reactor दिया? Experimental reactor दिया, उसका नाम था CANDU. So वो experimental pressurized heavy water reactor था. India got pressurized heavy water experimental reactor. उसका नाम इंडिया ने रखा साइरस. सबको खुश कर दी. देख रशिया तेरा भी नाम, देख यूएसए तेरा भी नाम, इंडिया हमारा भी नाम, सी कनाडा तेरा भी नाम. ठीक है, तो ओरिजिनली क्या था? कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम. सॉल्व फॉर्म क्या कैंडू का? कैनेडियन ड्यूटेरियम रिक्रिएशन एज साइरस रिएक्टर में इंडिया गॉट दैट कैंडू. फिर इंडिया ने, और उसका कैपेसिटी कितना था? 200 टू 250 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी. तो इसका मतलब क्या है? जनरल पर्पस वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए था. एंड कनाडा डिड नॉट थिंक अबाउट डेवलपिंग और डिड नॉट एक्सपेक्टेड दैट इंडिया वुड डेवलप न्यूक्लियर वेपन इन द नियर फ्यूचर. इंडिया ने क्या किया? उसको रिवर्स इंजीनियरिंग किया. उसका नाम रखा अफसर. फिर नाम रखा दूसरा और एक इंस्ट्रूमेंट बना के जर्ली नाम. जर्ली नाम. और ठीक है, सो रिवर्स इंजीनियर अप्सरा जर्मिना साइनस. और हर एक का कैपेसिटी कितना है? 250 मेगावाट. वो कैपेसिटी, तो एक्चुअली जनरेशन कितना होता है? 150 टू 200 मेगावाट. तो इंडिया हैज रिवर्स इंजीनियर दिस. तो इंडिया वेंट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्लान. सो थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्लान का पहला प्लान होगा. सो वी नीड टू डिस्कस दिस थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्लान, देन यू विल रियलाइज हाउ स्मार्ट दैट डिजाइन वाज. In 1950 or 1960, uranium, getting uranium or enriched uranium or plutonium was very scarce resource. जिस कंट्री को भी मिलता था वो क्या होगा? सुपर पावर बन जाता. So imagine the situation in 1960. So that was very scarce resource. And even if we wanted that nuclear fuel for energy purpose, even that was very scarce resource at that time, considering the geopolitical situation. And obviously Russia, USA, these countries, they would not let other countries to develop this element, right? Or जो भी nuclear fuel. So Homi Jahangir Baba developed three-stage nuclear program. So what is this? What is that design? फर्स्ट स्टेज में कैसे भी करके हम क्या लेंगे? प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर डिजाइन कर लेंगे और वो कनाडा से ले लेंगे. वो कौन सा डिजाइन होगा? कैंडू वाला. ये स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि इसमें एनरिचमेंट का कोई सवाल नहीं है. फर्स्ट वी वुड टेक प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर वेयर फ्यूल इज यूज्ड, दैट इज नथिंग बट व्हाट? यूरेनियम 238. एंड नेहरू एंड होमी जहांगीर बाबा हैड द कॉन्फिडेंस इन आवर साइंटिस्ट दैट कैसे भी कर, तो इतना तो कॉमन सेंस, तो हेवी वाटर तो बना ही लेंगे. ऐसी मूवी बनाना चाहिए. इसमें अक्षय कुमार बिल्कुल नहीं होना चाहिए. राइट. सो ये मॉडरेटर, राइट. तो इतना कॉन्फिडेंस है, हर पेट्रियोटिक मूवी हर अक्षय कुमार ही होते हैं. वो हो गया. ठीक. सो मॉडरेटर हेवी वाटर, कूलेंट और मॉडरेटर के लिए जो हेवी वाटर उसको लगता है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, ऑलरेडी एक्सप्लेन, वो तो हम बना लेंगे, हमारे साइंटिस्ट बना. तो यूरेनियम 238 से विद हेल्प ऑफ दिस रिएक्टर वी वुड गेट एनर्जी also. तो एनर्जी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए. इससे जो आउटपुट मिलेगा तो मींस वो होगा स्पेंट फ्यूल. So when you burn uranium 238 in pressurized water reactor, then spent fuel that comes out. Spent fuel is not discarded fuel. फेंकने वाला फ्यूल नहीं. इसमें क्या होता है? ऑक्साइड्स ऑफ, मिक्स ऑक्साइड्स ऑफ, इफ यू बर्न एनीथिंग तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ना. तो इसमें होता है मिक्स ऑक्साइड्स ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम. उसको ही बोलते हैं स्पेंट फ्यूल. एंड what India thought that somehow we would reprocess this spent fuel. We would remove this oxide from uranium and plutonium and we would get pure form of plutonium and uranium. That was the thing Canada never expected from India, that India would carry out this reprocessing of spent. उन्होंने सोचा भी नहीं, right? So mixed oxides of uranium, this is what spent fuel. And if a country has the technology to reprocess this spent fuel, you can get plutonium and uranium, right? So India thought that, or Baba and Nehru thought that somehow we could get the reprocessing technology. At that time, India did not have reprocessing technology, but they had the confidence in our scientists. So somehow we would get this plutonium. And वो भी प्लूटोनियम क्या है? 239 है. यूरेनियम 235 से कई गुना बेटर. क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास नंबर क्या है? ज्यादा है. Americans found this element accidentally. इसलिए Americans second time also Americans they decided to drop only one bomb just to return USA, sorry Japan. But they also tried second weapon. तो second weapon क्या था? प्लूटोनियम वाला. First क्या था? यूरेनियम 230. Batman and Little Boy. So American experimented two fuels. In fact, they wanted to experiment the fuels at the cost of lives of these Japanese people. तो 235 इससे भी dangerous element आ रहा है. Slowly we would isolate this plutonium to develop the nuclear. अब ये stage यहाँ पे नहीं है. Second stage में क्या है? They thought about energy security. At that time, one public sector enterprises were there, Mines and Mineral Development Corporation. See, that process began during Nehru era until 1995. India used to have 545 public sector enterprises, PSUs, public sector units. कितने?
545 1995 तो गूगल पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर हम पर ईयर भी देखेंगे तो बहुत, इमेजिन द सिचुएशन बीइंग 40-50 इयर्स, कितने सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यूनिट्स, और अभी नहीं। मैं कोई किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, इसको भी क्रिटिसाइज करूंगा, उसको भी क्रिटिसाइज, right? So Mines and Mineral Development Corporation found that India's largest reservoir of thorium. Coastal states like तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जो सैंड होता है, यहाँ पे दो एलिमेंट मिलते हैं, जर्कोनियम और दूसरा है थोरियम। ठीक है, थोरियम मींस 232। So Homi Jahangir Baba thought that if you could turn these even number into odd number, it is converted into uranium 233। तो अपने ही देश में अगर रिसोर्स है तो हम वो क्यों ना यूज करें? Why we need to follow this American model? We would breed these thorium into uranium 233, and at least we can use these uranium 233 to run the reactor. क्योंकि odd number है ना, right? So in second stage they thought to breed these thorium, and in third stage they thought to develop a separate reactor to run this thorium 233। ठीक है, तो spent fuel हो गया, reprocessed spent fuel हो गया, breeding। जब मैं 3 stage nuclear अभी सिखाने वाला हूँ, मैं going to talk about these 3 stage nuclear, उसमें समझ में आ जाएगा, और 3 stage nuclear program भी समझ में। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है, तो एक चार्ट बनाता हूँ, ठीक है, उसमें समझिए, ये चार्ट तुम स्क्रीनशॉट ले लो, और वैसे भी मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये है फर्स्ट स्टेज, ये है सेकंड स्टेज, ये है थर्ड स्टेज। प्रीलिम क्या क्वेश्चन पूछते हैं ये भी मैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज टाइप ऑफ रिएक्टर, फिर उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूल, देन मॉडरेटर, कूलेंट, एनर्जी, आउटपुट। ठीक है, इधर ध्यान। फर्स्ट स्टेज में टाइप ऑफ द रिएक्टर इज प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। कौन सा डिजाइन, कैन, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में फ्यूल कौन सा है, यूरेनियम 230। मॉडरेटर क्या है, हेवी वाटर। कूलेंट क्या है, हेवी। एनर्जी कितना मिल रहा है, 200 टू 250 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। आउटपुट क्या है, स्पेन फ्यूल। स्पेन फ्यूल मींस मिक्स ऑक्साइड्स ऑफ यूरेनियम प्लूटोनियम, इसको नॉनॉक्स फ्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें इसमें नहीं लिखेंगे, लेकिन ओरिजिनल डिजाइन क्या था, रीप्रोसेसिंग ऑफ स्पेन फ्यूल टू गेट प्लूटोनियम। ठीक है, राइट। कौन सा प्लूटोनियम, प्लूटोनियम 239, वेरी डेंजरस एलिमेंट। ठीक है, सेकंड स्टेज में, सो सेकंड स्टेज में रिएक्टर इज प्रोटोटाइप ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब ये प्रोटोटाइप ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी क्या है उसको समझते हैं, फिर ये समझ में है। ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी में सपोज मान लो ये एक अंडा है, अंडे से मुर्गी आए, मुर्गी ने 2 अंडे दी, तो धीरे धीरे मेरा पूरा पोल्ट्री फार्म और अंडे का एक बिजनेस बन जाएगा। इट्स नथिंग बट ब्रीडिंग। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन for the purpose of discussion of this topic? That breeding is the process when you get a greater amount of fissile material than originally consumed. क्या है, when you get greater amount of fissile material originally than you consume। ठीक है, इसका मतलब अगर ओरिजिनल फिसाइल मटेरियल मैंने 1 ग्राम यूज किया तो मुझे 3 ग्राम मिल रहा है, समथिंग लाइक, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रीडिंग। अब ब्रीडिंग कैसे करते हैं, ब्रीडिंग में कोर होता है, एक ब्रीडर, एक रिएक्टर होता है, जिसके कोर में बचा कुचा यूरेनियम 238 रखो, बचा कुचा यूरेनियम 234 रखो, और तुम्हारे देश में जो मिल रहा है, that is thorium you found in your country, and India's largest reservoir of thorium. So thorium is nothing but what, 232, and around that you use the blanket of pure plutonium 239। कहाँ से मिलेगा, first phase। ठीक है, so this plutonium is used as a source of neutron bombardment, as a source of energy to irradiate these things। So that's why in breeding process we do not have control on neutron, we do not use moderate, because here we require neutrons। फर्स्ट स्टेज में न्यूट्रॉन कंट्रोल करना जरूरी, क्योंकि चेन रिएक्शन कंट्रोल करना। यहाँ पे मुझे प्लूटोनियम में चेन रिएक्शन कंट्रोल नहीं करना है, क्यों, क्योंकि मैं न्यूट्रॉन को किसके लिए यूज कर रहा हूँ, ब्रीडिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, बिकॉज दीज आर इवन नंबर ऑफ एटॉमिक मास मींस न्यूट्रॉन हंग्री है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन ऐड होके क्या हो रहा है, यूरेनियम 238 से क्या हो जाएगा, प्लूटोनियम 239। किस प्रोसेस से हो रहा है, ऐसे ही बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। ब्रीडिंग से कैसे तुम यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम में टर्न कर देंगे, सी in pressurized heavy water reactor the fuel you use is uranium 238। न्यूट्रॉन ऐड किया, पहले क्या बन जाए, यूरेनियम 239, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर
वैरी हो गया, फिर बीटा माइनस डीके में न्यूट्रॉन्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, 92 तो प्रोटॉन का कितना हो गया, 93 हो गया नेपच्यूनियम। और उसके बाद फिर से क्या होगा, बीटा माइनस डीके, 93 का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 94, एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, मास नंबर वही है, एलिमेंट क्या हो गया, बदल गया। तो यूरेनियम 238 का क्या हो गया, प्लूटोनियम। समझ में आया? ये इसका मतलब ये तो जरूरी, दिस थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड दैट यूरेनियम 230, though यूरेनियम 230 is a natural uranium, though it is a fertile, though it's special, but if you have other technology you can convert it into most dangerous element. That's why India did not have that interest to have that light water to boil. India had different intention to give this pressurized water, because pressurized water reactor is the only reactor that uses uranium 238। समझ में? अब हमको बॉइलिंग वाटर फ्री में रखने दिया, और रिएक्टर क्यों नहीं चाहिए? क्यों? क्योंकि अमेरिकन gave us boiling water reactor in 1969 itself. When Nehru went to American authorities, अमेरिकन प्रेसिडेंट बोले आपको किस लिए चाहिए? अब नेहरू ने बोले एनर्जी तो मैं देता हूँ, तो ले लो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। लेकिन नेहरू knew that Americans would blackmail us. Americans would use these facilities to bargain the, or to direct the, or to direct, or what we can say, they could use this opportunity to influence the, what you can say, foreign policy of India. तो जैसे मान लो कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर दिया इंडिया 1969 में, और उसके फ्यूल रॉड खत्म हो गए, तो इट वाज लाइक रनिंग ए व्हाइट एलिफेंट एंड व्हाइट एलिफेंट, ठीक है? फ्यूल रॉड कहाँ से आएंगे? तो फ्यूल रॉड के लिए किसको फोन करेंगे आप? यूएस। फिर यूएस क्या करेगा, तुमको फ्यूल रॉड चाहिए तो मेरा काम कर, राइट? इसका हम पहले तो माचिस दे दिए, तेरी भी दी, बाद में क्या बोला, माचिस खत्म, फिर ऑब्वियसली तुम क्या मांगोगे, माचिस दे। तो ऑब्वियसली Americans would use these opportunity to influence the foreign policy of India, and Nehru knew about it. So Nehru was not at all interested in boiling water reactor or light water reactor. Nehru was interested in pressurized water reactor. समझ में आ रहा है? ठीक है? तो pressurized heavy water reactor में क्या है, you use plutonium as a blanket to irradiate its element. तो इसका मतलब यूरेनियम 238 का कन्वर्जन किसमें पॉसिबल है, प्लूटोनियम 239। ये यूरेनियम 234 का क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन ऐड होके, क्योंकि प्रोटॉन नंबर तो नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा, यूरेनियम 235। थोरियम 232 का क्या हो जाता है, यूरेनियम 233। ये एक्चुअली नहीं होता है, बट मेनी अदर बुक दिस इज दैट यस यूरेनियम 235 कैन बी, ठीक है? समझ में आया? इसका मतलब मुझे प्लूटोनियम भी मिला, मुझे यूरेनियम 233 भी मिला, लेकिन ओरिजिनल मैंने एक्स क्वांटिटी में मिला, मुझे डबल एक्स ट्रिपल एक्स मिल रहा है। तो क्या हुआ, ब्रीडिंग, right? So means you get maximum, you get greater amount of fissile material originally than you consume. That is the meaning of breeding. So in order to use our locally available resources, Homi Jahangir Baba thought to use these thorium, thought to convert this thorium into odd number atomic mass, or what is uranium 233, to run the reactor. So that with the help of this, we would ensure our energy security for almost around 100 to 150 years. क्योंकि हमारे देश में तैयार होगा ना, बचा कुचा प्लूटोनियम कहाँ पे जाएगा, वेपन के लिए। समझ में आया? So that's why initially under the design one institute had been established. उसका नाम इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च at Kalpakkam, and that institute had been asked to deliver 16 such a prototype of fast breeder reactor, right? But that institute has been able to deliver us only 2 such a prototype of fast breeder reactor. And in fact India has abandoned this program. There are different reasons out there why India has abandoned this program. We'll see. समझ में आया ब्रीडिंग? तो ये फ्यूल कहाँ से आया, ये मैं मॉक्स फ्यूल भी बोल सकता हूँ, या प्लूटोनियम 239 जो कहाँ से आया, मुझे फर्स्ट फेज में आया। इससे हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन यूज करके फिसाइल मटेरियल यूज करेंगे। अब जो भी यूरेनियम 233 मिलेगा, उसके लिए थर्ड स्टेज में हम क्या करेंगे, एक सेपरेट रिएक्टर बनाएंगे। दे थॉट दैट इन ऑर्डर टू यूज दिस थोरियम और यूरेनियम 233, they would develop an advanced heavy water reactor that would have a capacity of 1000 megawatt electricity generation per year। और वो क्या होगा, स्टेट ऑफ आर्ट होगा, वो हम बनाएंगे, राइट? सो इसमें 4 ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, एक मैंने बताना भूल गया। तो 4 ऑब्जेक्ट कैसा है, फर्स्ट वी नीड टू टॉक अबाउट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, पहले स्टेज में ये। नाउ दिस पेन फ्यूल इज वेरी डेंजरस फ्यूल, ये कोई ऑर्डिनरी, व्हाई नाउ हियर क्वेश्चन अराइजेस, इफ दैट वाज वेरी स्मार्ट डिजाइन, व्हाई अदर कंट्रीज दे did not think upon this design, why they never follow this design, and why they abandon this pressurized water reactor? The reason is the spent fuel you get in the first stage of reactor is very very dangerous fuel, वो water होता है, and that literally takes 5 years to cool down itself। कितना साल लगता है, 5 साल ठंडा होने के लिए लगता है, इतना रेडिएशन होता है, something like this, let me show you। ये दिख रहा है डिजाइन, ये स्विमिंग टैंक दिख रहा है, ये स्विमिंग के लिए नहीं जा रहा है, अगर जाएगा तो जल जाएगा। ये क्रिस्टल क्लियर वाटर कंसिस्ट ऑफ प्लूटोनियम एंड यूरेनियम, वेरी हाई रेडिएशन, एंड टू डी-रेडिएट इट ऑलमोस्ट टेक्स अराउंड 5 इयर्स। उसके बाद उसको क्लैडिंग टूब में किया जाता है, फिर कास्ट आयरन इंसर्ट, फिर एक सीमेंट कंक्रीट बेंटोइन क्ले यूज करते हैं, उसमें डंप किया जाता है, और दिस इज बीइंग डंप डीप अंडरग्राउंड, वेरी डेंजरस। अगर ये किसी के वाटर सिस्टम में चला गया तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे वुड डाई बिकॉज़ ऑफ थायराइड डैमेज एंड पैंक्रियाटिक डैमेज, थायराइड कैंसर से मर जाएंगे।
So that's why you always have that insecurity or fear that if somebody steals that particular nuclear fuel, and terrorists might use these fuel as dirty bombs. उसको क्या बोलते हैं? Dirty bomb. किसी water tank को pollute कर देना, किसी के food में डाल देना, उसको क्या बोलते हैं? Dirty bomb. So this paint, in fact, because of this paint, this has become very costly business. ये इतना costly हो गया है कि even after all this year, overall energy basket, if we consider, we have been able to increase the nuclear energy in overall energy basket. In overall energy basket, we have been able to increase the nuclear energy to only 3%. Itna 3%. Till now, only 3% of energy in overall energy basket we get from nuclear energy, even after all this years. क्यों? क्योंकि costly business है. 50% अमाउंट किसमें चला जाता है? स्पेन फ्यूल को हैंडल करने के लिए. So this paint fuel is very dangerous fuel, and that's why even Russians and Americans jointly they dismantle these projects. And they agreed that they would never carry out this reprocessing of spent fuel. And they always ask other countries not to carry out this reprocessing of spent fuel. Because, and why they dismantle this program? Because if you dismantle this program, इसका मतलब डिजाइन ही रहेगा तो कोई उसको चोरी नहीं करेगा. So both these countries they agreed that here on we will not pursue this program. क्योंकि उसमें क्या निकला? Plutonium निकला. Dirty bomb use हो सकता. But why India is after this pressurized water reactor? Because India wants to have plutonium, so that India could use this plutonium in the pressurized water, sorry, prototype of fast breeder reactor to breed. तो इसमें fuel क्या होगा? MOX fuel या reprocessed plutonium we get from first stage. MOX fuel या reprocessed plutonium 239 what we get from first stage. Moderator यहाँ पे हम use करते हैं क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन की जरूरत है. Here you are dealing with already reprocessed plutonium, dangerous element. Here you do not require water as a coolant. You would use different kind of कूलर. उसको बोलते हैं लिक्विड सोडियम. क्यों लिक्विड सोडियम? उसका इवेपोरेटिंग पॉइंट हाई होता है. लिक्विड सोडियम एनर्जी कितना जनरेट होता है? 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पर प्रोटोटाइप ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एनर्जी का काम करेगी. और आउटपुट क्या है? इरेडिएशन से क्या है? मिसाइल मटेरियल मिलता है. तो यूरेनियम 233. अल्टीमेट पर्पस ऑफ ब्रीडिंग इज व्हाट? टू कन्वर्ट थोरियम 232 इनटू, यहाँ पे मैं 239 भी लिख सकता है प्लूटोनियम. तो हम नहीं लिखेंगे. क्यों? सबको पता है कि प्लूटोनियम किसके लिए यूज होगा? बॉम्ब के लिए यूज होगा. ठीक है. Now third stage, they thought that in third stage they would develop advanced heavy water reactor. कौन सा? Advanced heavy water reactor. State of art develop advanced heavy water reactor. उसमें फ्यूल क्या होगा? सेकंड स्टेज में कौन सा? यूरेनियम 233 ब्रैकेट में लिखो थोरियम से आया हुआ. यहाँ पे क्या है? मॉडरेटर कूलम हेवी वाटर. एनर्जी कितना जनरेट होगा? 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पर. आउटपुट क्या है? कुछ नहीं. राइट. So why it is considered as smartest design? So we'll see all those objectives. Here, पहला objective क्या है? India wanted to use locally available resources, right? India wanted to use locally available resources, locally available fuel, हमने use कर. Second, India wanted to develop the nuclear weapon for deterrence purpose. ये भी होगा. India wanted to get rid of spent fuel. Somehow we have been able to get rid of spent fuel. उसको क्या है? MOX fuel breeding के लिए use करके, right? Fourth, क्या है? Simultaneously we have been able to ensure our energy security also, because we are not getting only fissile material, we are getting energy also. समझ में आ रहा है? So that's why that was considered as a smartest design. Now, what was the reason that India, meanwhile in 80s or 90s, abandoned this program? The problem is this has become very costly business. If you have pressurized heavy water reactor, that means you need to put so much amount of money just to handle this painting. अगर मान लो 10 रुपीज per unit cost, उसमें से 7 रुपीज किसके ऊपर खर्च हो रहा है? Paid to you. Now, why India has abandoned this program? Because nowadays India has civil nuclear deal with many other countries, and we are already getting ready to use low English fuel rods. India has enough plutonium to develop the nuclear. अब कोई जरूरत नहीं. Plutonium वाला resources है nuclear, और India does not have any clandestine design to increase the number of nuclear weapons. Deterrence purpose के लिए 40-50 ठीक है, और कोई यूज नहीं करें. समझ में आया? So that's why India has abandoned this program, because अगर तुम्हें 20 रुपए में अगर ready to use fuel rod मिल रहे, तो why anybody would spend 100 rupees just to fulfill this project? कोई लॉजिक नहीं. We are already getting ready to use fuel rod from Russia, और आजकल कोई नहीं देता, क्योंकि उससे कोई nuclear weapon नहीं करना. 3 to 5% रेट ठीक है. So 20 रुपए का काम अगर हो रहा है 100 रुपीज, ये पाकिस्तान को समझ नहीं आया. Seriously, Pakistan has spent enormous dollars just to develop the nuclear weapon, and you'll be surprised, उसका nuclear bomb, पाकिस्तान का nuclear tried और dropped it India से powerful है. This very dangerous situation. They have very sophisticated technology to deliver the nuclear weapon. Still India does not have that technology. उनके पास F-16 फाइटर प्लेन है जो कि न्यूक्लियर वॉर डिलीवर कर सकते. इंडिया के पास नहीं है. सुखोई का उतना लिफ्ट ऑफ कैपेसिटी नहीं. ठीक है. तो ये एक प्रॉब्लम. बट ये एक्चुअली इलॉजिकल थिंग टू डेवलप दिस न्यूक्लियर वेपन एट द कॉस्ट ऑफ अदर थिंग्स. बाकी खाने के लिए कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं. न्यूक्लियर क्या करेंगे? न्यूक्लियर
50% बजट अगर तुम्हारा डिफेंस में जा रहा है तो कोई पॉइंट ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज थिंग, reprocessing of space dangerous, dirty and expensive. Breeding समझ में आया? The process in which more pulsar material is being generated than that it originally consumed. Breeder reactor, ठीक है। 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में क्या क्वेश्चन आते हैं कि सेकंड स्टेज में मॉडरेटर कौन सा यूज होता है? नहीं यूज होता। कूलेंट क्या यूज होगा? लिक्विड सोडियम। थर्ड स्टेज में कौन सा रिएक्टर होता है? एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर। कौन सा फ्यूल होता है? यूरेनियम 233। क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, सो वी हैव अंडरस्टूड ऑल दीस थिंग्स, ठीक है। सिग्निफिकेंस तुम पढ़ लो, ठीक है, ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सिग्निफिकेंस India's आखिरी वाला देखो, आखिरी वाले 2 important point है। Remember, you need to link these things. If I showed you the image, why are this thing? अब इधर देखो, तुम गूगल पे कहीं पे भी सर्च करो, जो भी इंडिया ने रिवर्स इंजीनियरिंग, whatever the reactor India reverse engineer from originally came to design, each reactor has the capacity to generate 150 to 200 megawatt electricity. Max to max कितना? 250 megawatt electricity. तुम कहीं पे भी गूगल पे सर्च करो, लेकिन by what logic this minister says that he would generate 7,000 megawatt electricity each reactor? Each word थोड़ा ऑब्जेक्शनल, ये गलत है, होगा ही नहीं। अगर 7,000 है तो फिर रशिया और फ्रांस की क्या जरूरत है? जैतापुर में, कोवडा या फिर कर्नाटक में जो भी फैसिलिटी वी आर गेटिंग एडवांस रिएक्टर फ्रॉम दिस कंपनी, फ्रेंच आयोवा कंपनी, रॉसएटम रशियन कंपनी, यूएस जनरल इलेक्ट्रिक एंड हिताची, all these reactors are having the capacity to generate more than 2,000 to 1,000 to 2,000 megawatt electricity. Now, if pressurized water reactor में कौन सा यूज हो रहा है? यूरेनियम 230, वो फिसाई नहीं, तो 7,000 कहाँ से आएगा? अगर हमारा बेसिक्स क्लियर है तो हम न्यूज़पेपर के भी मिस्टेक नहीं करते। समझ में आ रहा है? बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो और ये थोड़ा अब समझ में ये क्यों ये एक it's not a good step. Why? Because if any company sees that India decided to follow this pressurized heavy water reactor, that the company would say that India has a clandestine design to develop plutonium, right? So that company would think, or that company would think that why that company would invest in India if that country has a clandestine design to develop them plutonium 213. So investment में थोड़ा क्या होता है? Effect होता है, and market runs on sentiments, you know it. Just sentiments, just एक रिपोर्ट आया पूरा डूब गया इंडियन पर, ठीक है। सो एक नेगेटिव इमेज आ रहा है कि इंडिया अभी भी क्या है, इंडियाज न्यू फॉर कॉन्फिडेंस एक्चुअली लेट द डेवलपमेंट ऑफ दिस थिंग्स, ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में जा रहा है। तो डेवलपिंग एंड रिजुवेनेटिंग प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर डिजाइन इज नॉट गुड स्टेप। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा अजीब है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविल न्यूक्लियर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारा शायद मंडे ट्यूसडे